then the terminology what is called as molecular formula. क्या है molecular formula? This molecular formula tells us about what are the elements present in the given one. कौन-कौन से एलिमेंट present? तो पीरियड टेबल में एलिमेंट कौन से एलिमेंट present and in what number they are present. For example, benzene का formula क्या है? C6H6. What is indicate? 6 कार्बन है ना और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. तो क्या मतलब है? कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन और उसका स्ट्रक्चर बताना. If a structure is known, I can calculate molecule by counting the individual. Is it okay? Structure पता है तो निकाल सकते हैं. अभी क्या करना है? हमें उल्टी गंगा रहेगी. क्या करना है? मुझे molecular formula दिया है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है उसका? एक स्ट्रक्चर होगा क्या? नहीं, उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर हो, वो सब स्ट्रक्चर्स मैं पॉसिबली ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? ठीक है? वेरी चलो लेट्स गो. तो जनरल टर्म में क्या लिख रहा हूँ जरा फिर मॉलिक्यूलर. अभी जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया मुझे स्ट्रक्चर निकालना है तो मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज लगेगी एंड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आई नीड इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. डिग्री ऑफ इसे हाइड्रोजन बॉन्ड इंडेक्स और हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिशिएंसी. ऐसे there are various terms I will be learning those. What we are looking for? Degree of, so there are three components: degree of concentration, hydrogen bond index. ठीक है? How to calculate it? Simplify from molecular form. Let's have a look on that. Clear? So we are writing the formula for that. So I am writing the formula. So du is equal to plus everybody double the number of carbon atoms, add 2, subtract hydrogen, add nitrogen and divided by 2. So what is the formula? Double the number of carbon, add 2, subtract hydrogen, and add सल्फर. हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन रहा तो उसके बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत. ठीक है? क्लियर हो गया? सपोज एक कंपोनेंट नहीं है उसमें से तो क्या करते हैं? जीरो पकड़ना है उसको. सिंपल. इज इट नॉट? हेलो समझ में आ गया? अभी इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा. इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? देख, इससे मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी? इससे मुझे du की वैल्यू मिलेगी. du की वैल्यू क्या मिलेगी? सपोज du की वैल्यू 0 है. इसका मतलब क्या है? There is no degree of unsaturation. What is the degree of unsaturation means? Listen carefully. Degree of unsaturation means actually it gives me an idea about is there any multiple bond and or बस ये की वैल्यू 0 है. इसका मतलब क्या है? इसमें कोई डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. एवरीथिंग इंक्लूड एज क्लियर. एंड मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड अ रिंग, डबल बॉन्ड एंड अ रिंग आर सेम. कैसे? फोकस फोकस. C6 हमारा जनरल फॉर्मूला है अल्केन का CH2. इसका फॉर्मूला क्या होता है? बराबर. इसको कैसे लिखोगे बेटा? 2 3 4 5 6 कैसे लिखा समझ में आया? ये लाइन मारो तो क्या हो गया? 2 क्योंकि ये क्या है? CH3. ये क्या है? CH2. This is called as zigzag table. क्या called as zigzag table? Okay? अभी सपोज इसमें से मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल लिए तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस कर दिया बेटा. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H12. अभी इसका du में निकालना है तो क्या आएगा बेटा? बताओ. 6 to the 12. 12 plus 2 14. 14 minus 14 comes out to be 100 divided by anything. तो du क्या हो गया? So there is no multiple
दोन रिंग. अजून एक पॉसिबिलिटी काय बेटा? x डबल बॉन्ड y प्लस बस. क्लियर? हे दाखवा चेहऱ्यावर. तीन चा काय असतं? ओके. तीन कसं काय? तीनचं तीन असं की दोन अधिक काय नाही दोन ना सिंपल काय दोन अधिक कसं काय बेटा सांगा. हॅलो आता काय केलं आहे? नाव आय engaging you in the inquiry that how to approach for the molecular formula to structure. Clear? मध्ये आले बाकी जाऊ नका पण वाढ होते. हां क्लियर? पहिल्यांदा काय केलं बेटा? सिंपल तीन चा बेटा दोन अधिक एक म्हणजे दोन मध्ये हे आणि ह्याच्यामध्ये हे आणि करा. अजून काय होऊ शकतं बेटा? बरोबर आहे. समजी अरेंजमेंट. आता याची काय सांगा बेटा? दोन x डबल बॉन्ड प्लस x प्लस y होऊ शकतं बेटा. काय होऊ शकतं? इज इट नॉट? नो होऊ शकतं ना. अजून काय होऊ शकतं बेटा सांगा? व्हेरी गुड. आता काय होऊ शकतं बेटा? दोन रिंग एक डबल बॉन्ड किंवा तीन रिंग. व्हेरी गुड. अजून काय होऊ शकतं बेटा? हा ठीक है? ओके क्लियर? ठीक है? Now next. When a DU is 4, पहिली पॉसिबिलिटी काय करायची? एरोमॅटिक. काय करायची? याचा मतलब अर्थ काय आहे? एरोमॅटिक खूप मोठा वर्ड आहे. तुम्ही ट्रॅक पॉइंट लिहितो नेक्स्ट सेशन. याचा अर्थ काय? की एक बेन्झीन रिंग असू शकते. बरोबर आहे का? काय त्या बेन्झीन मध्ये बेन्झीन शक्य होतं. याचा एक सूत्र काय आहे? बेन्झीन येतो. किती आहे DU त्याचा? 1 2 3 तीन डबल बॉन्ड आणि 1 दोन DU किती आला? 6 फॉर्म्युला काढा. 6 12 12